So I always had this in mind that I would want to at some point also write books. So I've been writing as a journalist for newspapers and magazines. I started as a city reporter in Bombay. After that I worked in Delhi also with Hindustan Times and with Brunch magazine, which is the Sunday magazine. And then I started, after my MA, I started writing independent. बस क्या चोरी करके थोड़ी लाया प्लस किसी से मैंने ब्राइब नहीं ली है ओनली एंड ओनली कच्चे में काम किया है क्योंकि सिस्टम नहीं बन पा रहा सो ग्रे मनी इज आल्सो देयर नो ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं ब्लैक और ग्रे मनी भी है भाई ये चोरी की नहीं है बस इसको इसका हिसाब किताब नहीं है मेरे पास सो हीरो बनने के लिए विलन की रिक्वायरमेंट है विदाउट विलन नो कैन बिकम अ हीरो और हीरो ने भी कहीं ना कहीं my own book and it's Live, Love and Laugh and okay, I'm just giving you a practice, okay? I'm just everyone please just listen to the words and do what I'm saying. Everyone please close your eyes. Now everyone close your eyes. Ask someone to read these lines, okay? I'm reading these lines. Imagine yourself sitting in your bedroom, okay? You are sitting in your bedroom. The room is calm, cool, and there is enough warmth. Suddenly someone comes into your room with a plate. It's a white plate in which a lemon is placed. You cut the lemon, put some salt on it. It's a yellow lemon. You squeeze the salted lemon juice on your tongue and feel the taste of sour lemon. Okay, now stop, open your eyes. Now just tell me, is your mouth watering? Is your mouth watering? This is the power of our mind. The power of words. This is the power of words. This is the power of our imagination. The mouth is watering. The reason is because everything is possible. Everything is possible. If you want a 500 crore company, just make a proper visualization. Your mind work on your emotions. Your mind work. Your mind, your emotions, your everything work on your emotions and in your mind. So there is a great power in your subconscious mind. There is a great power in you. So you can achieve whatever you want. But the real thing is you have to work on it. You have to work on yourself. You have to work on your subconscious. You have to work on your powers. So this is the book which I wrote to, to complete our own dreams, to complete our, our old goals of life. Whatever we want, no? So, travel a lot. I am quite an avid traveler. Okay. So I have been wanting to explore Chandigarh, Ambala since a long time, and I thought this is a good start. So yeah, that's a good thing. really, it's really a very nice effort from you, ma'am, because you are here with us for these books and not for many books and for the literary events, just to create the awareness for the books and literary. It's really a not only this is just a this is just a some people run the NGOs and social work they are doing. But this is also a kind of social work, because we are there is a social children to do there is a social cause with books. It's not just a commercial activity. Actually, It is not. Of course. And what I feel we should motivate every social cause. Absolutely. Great. कि आप सब लोग कहीं बोर ना हो रहे हो इतनी सारी बुक्स यंग रीडर्स आर देयर। तो इसमें जो फर्स्ट है कि एक्चुअल में व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग, जो फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड चैप्टर इज बर्निंग डिजायर। देयर शुड बी अ बर्निंग डिजायर। एक ऐसा डिजायर होना चाहिए जैसे अर्जुन का था, अपने उस पे तीर पे निशाना लगाना है, तो तीर से जो निशाना लगाना था आंख पर, तो वो उसे कुछ और नजर नहीं आता था उस पेड़ पर, उसको सिर्फ वो मछली की चिड़िया की वो एक आंख ही नजर आ रही थी। तो वो आंख पे जब उसने इशारा लगाना था तो दैट इज एक डिजायर था और वो एक ही गोल था। उसी के ऊपर ही उसने क्या किया, उस पर विजुअलाइजेशन की, विजुअलाइज किया कि मैं उस आंख पर निशाना लगा रहा हूँ।
तो आगे पीछे आसपास उसे कुछ नजर नहीं आया, उसे पेड़ नहीं नजर आया, उसे पत्ते नजर नहीं आए, उसे आसपास कुछ और नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक बिलीव सिस्टम, बिलीव इन योरसेल्फ। मैं आपको बिलीव के बारे में भी अभी थोड़ा सा और टाइम आई थिंक हुआ तो जरूर बताऊंगी कि बिलीव सिस्टम कैसे बनता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में परसेप्शंस कैसे क्रिएट होती हैं, और ग्रेटिट्यूड, द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि किस तरीके से लाइफ में ग्रेटिट्यूड हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। जब हमें अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना, हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को रेज करना है, हमें अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करनी है। और उसके बाद है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। देयर इज अ इमेंस पावर इन फॉरगिवनेस। whatever people do with us now, we punish ourselves more because we don't forgive. If we don't forgive, we are punishing ourselves. No? I think we should forgive it immediately and make ourselves into the peace. We should live in the life with a peaceful and happy manner. No? Because the other did the same thing. आपसे किसी ने आपसे गलत कह दिया, आपको साथ गलत कर भी दिया। अब हो क्या रहा है, एक तो हमारे साथ गलत हुआ, ऊपर से हमने उनको फॉरगिव नहीं किया, तो और क्या हम क्या करें, हम अपने साथ और गलत कर रहे हैं, हम अपनी वाइब्स को लो कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम और ज्यादा अपने आप अपनी पैशन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसे उसी वक्त फॉरगिव कर देंगे कि वो उनका कर्मा था, हमारा कर्मा नहीं है, तो दैट इज द पावर। तो उस पावर को अटेन कैसे करेंगे हम, देयर इज अ स्ट्रेंथ इन लव। नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेंथ इन लव। This is the most strengthful, thing in the universe. That is love. Or miracles. How can we attract miracles in relationships? How can we attract abundance in life, in health? And how to become a money magnet? Definitely, it's a goal of everyone. And there are lots of affirmations. There is a Ho'oponopono technique for easy manifestation. And in the last, the path to inner peace and contentment with a yogic perspective. I think spirituality is the main thing which we can achieve the peace and attain the enlightenment, and we can attain the main awakening of the soul. And that is the last step of life. And what I think that we all are merged into to achieve the goals, to achieve the success, to achieve the good health, to achieve a good money. And at last, what is the thing we crave for? That is the really God knowledge. That is the attainment of the real God. What is God? Where is God? Where it is? And that is the only knowledge which can give us the satisfaction in our life, which can give us the peace, which can give us the happiness. So this is the book which will help us all to achieve our own dreams and our own goals. Thank you. Travel a lot. I'm quite private traveler. Okay. So I have been wanting to explore Chandigarh, Ambala since a long time, and I thought this is a good start. So yeah, so that's a good thing. Really, it's really a very nice effort from you, ma'am, because you are here with us for the books and not for many books and for the literary events, just to create the awareness for the books and literary. It's really not only this is just a some people run the NGOs and social work they are doing. But this is also a kind of social work, because we are not the social children to do There is a social cause with books. It's not just a commercial activity. Actually, It is not. social cause, Of course. And what I feel we should motivate every social cause. Absolutely. Great. बस ये चोरी करके थोड़ी लाया, प्लस किसी से मैंने ब्राइब नहीं ली है, ओनली एंड ओनली कच्चे में काम किया है, क्योंकि सिस्टम नहीं बन पा रहा। सो ग्रे मनी इज आल्सो देयर, नो ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं, ब्लैक एंड ग्रे मनी भी है भाई, ये चोरी की नहीं है, बस इसको इसका हिसाब किताब नहीं है मेरे पास। सो हीरो बनने के लिए विलन की रिक्वायरमेंट है, विदाउट विलन नो कैन बिकम अ हीरो। और हीरो ने भी कहीं ना कहीं कि आप सब लोग कहीं बोर ना हो रहे हो, इतनी सारी बुक्स यंग रीडर्स आर देयर।
तो इसमें जो फर्स्ट है कि एक्चुअल में व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग, जो फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड चैप्टर इज बर्निंग डिजायर। देयर शुड बी अ बर्निंग डिजायर, एक ऐसा डिजायर होना चाहिए जैसे अर्जुन का था, अपने उस पे तीर पे निशाना लगाना है, तो तीर से जो निशाना लगाना था आंख पर, तो वो उसे कुछ और नजर नहीं आता था उस पेड़ पर, उसको सिर्फ वो मछली की और सॉरी चिड़िया की वो एक आंख ही नजर आ रही थी। तो वो आंख पे जब उसने इशारा लगाना था तो दैट इज एक डिजायर था और वो एक ही गोल था, उसी के ऊपर ही उसने क्या किया, उस पर विजुअलाइजेशन की, विजुअलाइज किया कि मैं उस आंख पर निशाना लगा रहा हूँ। तो आगे पीछे आसपास उसे कुछ नजर नहीं आया, उसे पेड़ नहीं नजर आया, उसे पत्ते नजर नहीं आए, उसे आसपास कुछ और नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम, बिलीव इन योरसेल्फ। मैं आपको बिलीफ के बारे में भी अभी थोड़ा सा और टाइम आई थिंक हुआ तो जरूर बताऊंगी कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में परसेप्शंस कैसे क्रिएट होती हैं, और ग्रेटिट्यूड, द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि किस तरीके से लाइफ में ग्रेटिट्यूड हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। जब हमें अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को रेज करना है, हमें अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करनी है। और उसके बाद है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। देयर इज अ इमेंस पावर इन फॉरगिवनेस। whatever people do with us, now we punish ourselves more because we don't forgive. If we don't forgive, we are punishing ourselves. Now, I think we should forgive it immediately and make ourselves into the peace. We should live in the life with a peaceful and happy manner. Na? Because the other did the same thing. आपसे किसी ने आपसे गलत कह दिया, आपको साथ गलत कर भी दिया, अब हो क्या रहा है, एक तो हमारे साथ गलत हुआ, ऊपर से हमने उनको फॉरगिव नहीं किया, तो और क्या, हम क्या करें, हम अपने साथ और गलत कर रहे हैं, हम अपनी वाइब्स को लो कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम और ज्यादा अपने आप अपनी पैशन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसे उसी वक्त फॉरगिव कर देंगे कि वो उनका कर्मा था, हमारा कर्मा नहीं है, तो दैट इज द पावर। तो उस पावर को अटेन कैसे करेंगे हम, देयर इज अ स्ट्रेंथ इन लव। नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेंथ इन लव। This is the most strengthful, thing in the universe. That is love. Miracles. How can we attract miracles in relationships? How can we attract abundance in life, in health, and how to become a money magnet? Definitely, it's a goal of everyone. And there are lots of affirmations. There is a Ho'oponopono technique for easy manifestation. And in the last, the path to inner peace and contentment with a yogic perspective. I think spirituality is the main thing which we can achieve the peace and attain the enlightenment, and we can attain the main awakening of the soul. And that is the last step of life. And what I think that we all are merged into to achieve the goals, to achieve the success, to achieve the good health, to achieve a good money, and at last, what is the thing we crave for? That is the really God knowledge. That is the attainment of the real God. What is God? Where is God? Where it is? And that is the only knowledge which can give us the satisfaction in our life, which can give us the peace, which can give us the happiness. So this is the book which will help us all to achieve our own dreams and our own goals. Thank you. Since 2004, I was working as a journalist. So I always had this in mind that I would want to at some point also write books. So I've been writing as a journalist for newspapers and magazines. I started as a city reporter in Bombay. After that, I worked in Delhi also with Hindustan Times and with Brunch magazine, which is the Sunday magazine. And then I started, after my MA, I started writing independent. My own book, and it's Live, Love and Laugh. And okay, I'm just giving you a practice. Okay, I'm just everyone please just listen to the words and do what I'm saying. Everyone please close your eyes. Now everyone close your eyes. Ask someone to read these lines. Okay, I'm reading these lines. Imagine yourself sitting in your bedroom. Okay, you are sitting in your bedroom. The room is calm, cool, and there is enough warmth. Suddenly someone comes into your room with a plate. It's a white plate in which a lemon is placed. You cut the lemon, put some salt on it,
It's a yellow lemon. You squeeze the salted lemon juice on your tongue and feel the taste of sour lemon. Okay, now stop. Open your eyes. Now just tell me, is your mouth watering? Is your mouth watering? This is the power of our mind. The power of words. This is the power of words. This is the power of our imagination. The mouth is watering. The reason is because everything is possible. Everything is possible. If you want a 500 crore company, just make a proper visualization. Your mind work on your emotions. Your mind work. Your mind, your emotions, and your everything work on your emotions and in your mind. So there is a great power in your subconscious mind. There is a great power in you. So you can achieve whatever you want. But the real thing is you have to work on it. You have to work on yourself. You have to work on your subconscious. You have to work on your powers. So this is the book which I wrote to complete our own dreams, to complete our, our old goals of life, whatever we want, no? So, my own book, and it's Live, Love and Laugh, and okay, I'm just giving you a practice, okay? I'm just, everyone please, just listen to the words and do what I'm saying. Everyone please close your eyes. Now, everyone close your eyes. Ask someone to read these lines. Okay, I'm reading these lines. Imagine yourself sitting in your bedroom. Okay, you are sitting in your bedroom. The room is calm, cool, and there is enough warmth. Suddenly, someone comes into your room with a plate. It's a white plate in which a lemon is placed. You cut the lemon, put some salt on it. It's a yellow lemon. You squeeze the salted lemon juice on your tongue and feel the taste of sour lemon. Okay, now stop. Open your eyes. Now just tell me, is your mouth watering? Is your mouth watering? This is the power of our mind. The power of words. This is the power of words. This is the power of our imagination. The mouth is watering. The reason is because everything is possible. Everything is possible. If you want a 500 crore company, just make a proper visualization. Your mind work on your emotions. Your mind work. Your mind, your emotions, and your everything work on your emotions and in your mind. So there is a great power in your subconscious mind. There is a great power in you. So you can achieve whatever you want. But the real thing is you have to work on it. You have to work on yourself. You have to work on your subconscious. You have to work on your powers. So this is the book which I wrote to complete our own dreams, to complete our, our old goals of life, whatever we want, no? So, कि आप सब लोग कहीं बोर ना हो रहे हो, इतनी सारी बुक्स यंग रीडर्स आर देयर. तो इसमें जो फर्स्ट है कि एक्चुअल में व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग, जो फर्स्ट चैप्टर. द सेकंड चैप्टर इज बर्निंग डिजायर. देयर शुड बी अ बर्निंग डिजायर. एक ऐसा डिजायर होना चाहिए जैसे अर्जुन का था, अपने उस पे तीर पे निशाना लगाना है, तो तीर से जो निशाना लगाना था आंख पर, तो वो उसे कुछ और नजर नहीं आता था उस पेड़ पर. उसको सिर्फ वो मछली की, चिड़िया की वो एक आंख ही नजर आ रही थी. तो वो आंख पे जब उसने इशारा लगाना था, तो दैट इज एक डिजायर था और वो एक ही गोल था. उसी के ऊपर ही उसने क्या किया, उस पर विजुअलाइजेशन की, विजुअलाइज किया कि मैं उस आंख पर निशाना लगा रहा हूँ. तो आगे पीछे आसपास उसे कुछ नजर नहीं आया, उसे पेड़ नहीं नजर आया, उसे पत्ते नजर नहीं आए, उसे आसपास कुछ और नजर नहीं आया. ठीक है, एक बिलीव सिस्टम, बिलीव इन योरसेल्फ. मैं आपको बिलीव के बारे में भी अभी थोड़ा सा और टाइम आई थिंक हुआ तो जरूर बताऊंगी कि बिलीव सिस्टम कैसे बनता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में परसेप्शंस कैसे क्रिएट होती हैं.
और ग्रेटिट्यूड, द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि किस तरीके से लाइफ में ग्रेटिट्यूड हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। जब हमें अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को रेज करना है, हमें अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करनी है। और उसके बाद है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। देयर इज अ इमेंस पावर इन फॉरगिवनेस। whatever people do with us now, we punish ourselves more because we don't forgive. If we don't forgive, we are punishing ourselves. No? I think we should forgive it immediately and make ourselves into the peace. We should live in the life with a peaceful and happy manner. No? Because the other did the same thing. आपसे किसी ने आपसे गलत कह दिया, आपको उस साथ गलत कर भी दिया। अब हो क्या रहा है, एक तो हमारे साथ गलत हुआ, ऊपर से हमने उनको फॉरगिव नहीं किया, तो और क्या हम क्या करें, हम अपने साथ और गलत कर रहे हैं। हम अपनी वाइब्स को लो कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम और ज्यादा अपने आप अपनी पैशन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसे उसी वक्त फॉरगिव कर देंगे कि वो उनका कर्मा था, हमारा कर्मा नहीं है, तो दैट इज द पावर। तो उस पावर को अटेन कैसे करेंगे हम? देयर इज अ स्ट्रेंथ इन लव। नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेंथ इन लव। This is the most strengthful, thing in the universe. That is love. Miracles. How can we attract miracles in relationships? How can we attract abundance in life, in health? And how to become a money magnet? Definitely, it's a goal of everyone. And there are lots of affirmations. There is a Ho'oponopono technique for easy manifestation. And in the last, the path to inner peace and contentment with a yogic perspective. I think spirituality is the main thing which we can achieve the peace and attain the enlightenment, and we can attain the main awakening of the soul. And that is the last step of life. And what I think that we all are merged into to achieve the goals, to achieve the success, to achieve the good health, to achieve a good money. And at last, what is the thing we crave for? That is the really God knowledge. That is the attainment of the real God. What is God? Where is God? Where it is? And that is the only knowledge which can give us the satisfaction in our life, which can give us the peace, which can give us the happiness. So this is the book which will help us all to achieve our own dreams and our own goals. Thank you.